तो जियो ने एक मुफ्त एआई कोर्स निकाला है और मैंने इसका पहला हफ्ता पूरा कर लिया है। करीब 3 घंटे लगे मुझे। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। कैसा है ये कोर्स, क्या क्या सीखने को मिलता है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस पर अपना टाइम लगाना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, बस 3 घंटे। सोचिए, बस एक फिल्म देखने जितना टाइम। मतलब पहले हफ्ते का पूरा मॉड्यूल, क्विज, असाइनमेंट, सब कुछ बस 3 घंटे में खत्म। इतने में तो एआई की दुनिया में एक अच्छी खासी एंट्री हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये 3 घंटे लगाना वर्थ इट है? मतलब मुफ्त की चीज है तो क्या सच में कुछ सीखने को मिलता है? बस बने रहिए, इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये कोर्स है क्या, फिर लॉगिन कैसे करना है, इसमें सीखने को क्या मिलता है, क्विज और असाइनमेंट कैसे हैं, और आखिर में मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी नया लर्नर इसे देखेगा। तो ठीक है, सबसे पहली चीज, कोर्स में घुसना कैसे है? मतलब लॉगिन और डैशबोर्ड तक कैसे पहुंचना है? प्रोसेस एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं। बस अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा वो डालो, और बूम, आप सीधा कोर्स के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। 2 मिनट का काम है बस। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही काम की चीज पता चली। जो लाइव वीडियो है ना, उसे आप बीच में रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई काम आ गया तो बस पॉज कर दीजिए। और कमाल की बात यह है कि आप 1 घंटे बाद भी वापस आकर ठीक वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां छोड़ा था। ये फीचर सच में बहुत काम का है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मतलब सीखने को क्या मिलता है। पहले हफ्ते में असल में क्या क्या कवर किया गया है। तो जो मेन वीडियो है उसमें 2 एक्सपर्ट्स हैं। एक हैं डॉक्टर शैलेश, जो एआई का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। और दूसरे हैं अर्पित तिवारी, जो एक एआई साइंटिस्ट हैं। वो टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को समझाते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो वीडियो में 4 मेन टॉपिक्स हैं। पहला कि भाई एआई है क्या, दूसरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स क्या होते हैं, तीसरा मशीन लर्निंग और उसके एल्गोरिदम्स के बारे में, और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और उसकी प्रैक्टिस। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर इनका खास फोकस है। देखिए, एआई से सिर्फ सवाल पूछना ही काफ़ी नहीं है। कैसे सवाल पूछें, ये एक कला है, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। और सच कहूं तो ये स्किल आज के टाइम में सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। सिर्फ मेन वीडियो ही नहीं है, इसके साथ आपको 3 और यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं। और तो और, जो पूरा लाइव सेशन था ना, उसकी एक पूरी पीडीएफ समरी भी है। ये रिवीजन के लिए तो मतलब एकदम परफेक्ट है। तो सीखने वाला पार्ट हो गया। अब बारी आती है टेस्ट की। हाँ, एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्विज है, ये देखने के लिए कि कितना समझ आया। क्विज के रूल्स भी सीधे साधे हैं। पास होने के लिए 10 में से 8 सवाल सही करने होंगे, तभी अगला मॉड्यूल खुलेगा। और अगर फेल हो गए तो कोई टेंशन नहीं, आप जितनी बार चाहें दोबारा कोशिश कर सकते हैं। हाँ, पर वो ट्रैक करते हैं कि कितनी बार अटेम्प्ट किया। और यहाँ एक और प्रो टिप, याद है वो पीडीएफ जो रिवीजन के लिए मिली थी, उसे क्विज देते टाइम साइड में खोलकर रख सकते हैं। इससे सही जवाब ढूंढने में काफी हेल्प हो जाती है। थोड़ा स्मार्ट वर्क तो बनता है कि नहीं? चलो, क्विज भी हो गया। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, असाइनमेंट। यहां जो कुछ सीखा है उसे असल में इस्तेमाल करके देखना है। यह असाइनमेंट 3 पार्ट्स में है। तो इसमें 3 छोटे छोटे टास्क हैं। पहले 2 टास्क में तो आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाना है, लेकिन जो तीसरा वाला है ना, वो सबसे मजेदार है। उसमें एआई की मदद से एक पूरी स्टोरी बुक बनानी है। और सच बताऊं, ये स्टोरी बुक बनाने वाला टास्क बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इसमें क्रिएटिविटी भी थी और मजा भी। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई असाइनमेंट कर रहा हूं, लगा जैसे कोई गेम खेल रहा हूं। हाँ, पर असाइनमेंट सबमिट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सारे प्रॉम्प्ट्स और जवाब एक वर्ड फाइल में डालने हैं। फाइल का नाम सही फॉर्मेट में रखना है। और हाँ, स्टोरी बुक का लिंक भी डालना मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार सबमिट कर दिया तो कर दिया, कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो सब कुछ अच्छे से चेक करके ही सबमिट करना। तो वीडियो देख लिया, क्विज दे दिया, असाइनमेंट भी कर लिया। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या जियो के इस फ्री एआई कोर्स का पहला हफ्ता वो 3 घंटे डिजर्व करता है? चलिए मैं अपना फाइनल फैसला बताता हूं। देखिए, ओवरऑल ये कोर्स बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जो लाइव वीडियो का कंटेंट है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्विज और असाइनमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल हैं। मेरे हिसाब से तो ये 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वसूल है।
और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कुछ नहीं पता। सच तो ये है कि मुझे एआई के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, फिर भी मुझे इस कोर्स में कुछ नई और काम की बातें सीखने को मिली। इससे पता चलता है कि कंटेंट में दम है। आखिर में ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या इस तरह के फ्री और आसानी से मिलने वाले कोर्सेज सच में एआई की पढ़ाई को हर किसी तक पहुंचा पाएंगे? क्या इससे टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बदलेगा? सोचने वाली बात है ना? Welcome to The Explainer. Today, we are cracking the code on the first week of the GeoFree AI course. We're going to cover everything you need to know, from logging in to hitting that final submit button. And we'll do it all in about the time it takes to watch a movie. So let's jump right in. So here's our roadmap for today. We'll kick things off with the basics, just getting you logged in. Then we'll dive into the actual content of week 1. After that, I've got some great tips for acing the quiz and tackling the assignment. And finally, we'll cover the most important part, how to submit your work and wrap it all up. All right, first things first, let's get you in the door. And hey, stick with me for a second, because I'm going to share a little time-saving trick that was a complete game changer for me, especially if you're trying to fit this course into a busy schedule. As you can see, the course is super flexible. You've got 5 different live sessions every day, so it doesn't matter if you're a morning person or a night owl, there's a time that'll work for you. And don't worry if you're running a couple of minutes behind, they even give you a 5-minute grace period to join. Okay, so here's that pro tip I promised. If you can't sit through a whole live session, all you have to do is log in, start the video, and then immediately pause it. That's it. Doing that unlocks the video, letting you watch it whenever you have time. Trust me, I tried it myself, and it is an absolute lifesaver. All right, so you're in. Now, what are you actually going to be learning? Week 1 is really all about setting up a solid foundation. The stuff you cover here is what you'll build on for the entire rest of the course. The main technical stuff is taught by AI scientist Arpit Tiwari. He basically walks you through 4 key areas. You'll start with the big picture question. What even is AI? Then get into the nitty-gritty of things like LLMs and machine learning, before you land on the most hands-on skill of the week, prompt engineering. Now, I want you to really pay attention to this quote, because it might just be the most important piece of advice you get all week. The instructors say it over and over. Focus on prompt engineering. Why? Because if you can get good at telling an AI what you want, you can pretty much use any AI tool out there effectively. Now, besides the main lecture, you also get some extra resources. There are a few short YouTube videos to watch, but the real gold here, it's that course content PDF. I'm serious. Download this thing immediately. It is about to become your new best friend. And here's why that PDF is so important. When it's quiz time, you're going to want to have that document open. It has literally everything that was covered in the video, which means, yep, it's your secret weapon. Think of it like your official course-approved cheat sheet. Okay, so you've watched the video, you've downloaded your PDF secret weapon, you're ready to go. Let's talk about the quiz, your first real test in the course. Your mission here is pretty straightforward. Get an 80%. It's a 10-question quiz, so that means you need to get at least 8 of them right. You pass that, and you unlock the next part of the course. Now, there's a little bit of good news and, well, a small heads up. The good news is, if you don't pass, you can take it again. No big deal. The heads up, though, is that your dashboard actually shows how many times you've attempted the quiz. So while you have a safety net, you'll probably want to aim to get it done in one shot. Once you've knocked out the quiz, it is time to roll up your sleeves and get your hands dirty with the assignment. And this is actually a lot of fun. It's not just a test, it's a 3-part challenge where you get to actually use what you've learned about prompt engineering. So as you can see, it's broken into 3 parts. For the first 2, the superhero and microbes tasks, you'll be tweaking prompts they give you. But the third one, that's where you really get to be creative. You'll make up your own prompt and image to generate a whole storybook from scratch. And honestly, from what we've heard, that storybook task is the best part of the whole week for a lot of people. It's a really cool chance to see how creative AI can be, and it makes the whole assignment feel a lot less like homework and more like a fun project. So, when you're all finished with the fun part, you've got to pull it all together into a single document. Make sure it includes the original prompts you used, the full responses you got back from each AI tool, and of course, the shareable link to that awesome storybook you made. You've watched the videos, you've passed the quiz, you've finished the awesome assignment, you are in the home stretch. But listen up, because this next part, the submission, is where you really need to pay attention.
The submission process is super specific, so follow these steps exactly. First, name your file precisely like you see here. Second, paste your Storybook URL into that dedicated link box. Third, upload your document. And fourth, take a deep breath and hit that submit button. And this right here, this is probably the single most important warning for all of week 1. You only get one chance to submit your assignment. There are no do-overs, so I'm begging you, double-check, triple-check everything before you click that final button. So when you look back at the week, it really just comes down to these 4 simple phases. You learn the material from the video and PDF, you test your knowledge with a quiz, you apply it with a 3-part assignment, and then you submit your final work, just that one time. And remember what I said way back at the beginning? The total time you'll probably spend on all of this, start to finish, is right around 3 hours. As you can see, that's pretty much the same amount of time you'd spend watching a new blockbuster movie. Which really just leaves us with one final thought. It's not about whether you have enough time, it's about what you choose to do with it. So what amazing new skill are you going to learn in the time it takes you to watch just one movie?